Hello everybody. Student, today I will cover some question from the last exercise of ratio and proportion, that is especially on the basis of componendo and dividendo. Some more things given that in that alternando, invertendo, etc. That invertendo, that is mean that reciprocal of the given ratio. Alternando means that cross multiplication, whatever come that. But mainly we have to focus on these two, componendo and dividendo. So your questions come in board exam on the basis of componendo and dividendo. That so student, for the componendo, if A ratio B is equal to C ratio D, so we can write that A plus B ratio B equal to C plus D ratio D. क्या किया, B को A में ऐड किया, D को C में ऐड किया, so A plus B ratio B equal to C plus D ratio D. Either here for the dividendo, in the place of plus have to change minus only, that A minus B, C minus D. If we combine both, अगर दोनों को हम combine कर रहे हैं, so we'll find a relation. If A ratio B equal to C ratio D, if you are using the componendo and dividendo, so this we can write also A upon B equal to C upon D. So by componendo and dividendo, I have to write it A plus B. What I did that B added with A, ठीक है, equal to here what will be D added with C. Same process in denominator. You have to subtract B from A. You have to subtract D from C. So A plus B upon A minus B equal to C plus D upon C minus D. That will be componendo and dividendo. Short form you can say that by C and D. By C and D. So this is the method to apply that. Yeah. क्या किया हमने, B added with the numerator, denominator added with the numerator. जो प्रोसेस आप अप्लाई किए इधर न्यूमरेटर में, वही राइट साइड सेम प्रोसेस यू हैव टू अप्लाई दैट. D denominator added with the numerator, C plus D, A plus B, C plus D upon A minus B, B subtracted from the numerator, A minus B, D subtracted from the numerator, C minus D. So A plus B upon A minus B, C plus D upon C minus D. So let's take some questions to understand. I will take few questions, different type question. So student, next question, x is equal to 8ab upon a plus b. Find the value of x plus 4a upon x minus 4a plus x plus 4b upon x minus 4b. This type question अगर कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है किसी भी बुक में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसका आंसर हमेशा मोस्टली विल फाइंड आउट आंसर 2. या so x is equal to 8ab upon a plus b. By using this we have to prove x plus 4a given. x plus 4 means x के साथ क्या है, 4a है. So first we break down this. We can write x is equal to 2 into 4 into 2. क्या है, 4a है. हम क्यों नहीं लिख दे इसको 4a 2b. What I did, 8 broken into 4 into 2, 8ab. वही चीज़ है, सेम चीज़ है, केवल 4a हम लाने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो. So 4a we have to bring down that, transpose 4a. So we have to write, we can write here x upon 4a equal to 2b upon a plus b, right? 4a taken down that, transpose the 4a, x upon 4a is equal to 2b upon a plus b. Now applying the c and d. So what can you write here if you apply the c and d? X plus 4a upon x minus 4a, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. जो जिस प्रोसेस का न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही चीज़ राइट साइड आई हैव टू अप्लाई दैट सेम थिंग. सो 2b प्लस a प्लस b एंड हियर 2b माइनस, if you write here minus, this sign also will be changed, can write here minus b. Yes. So if we simplify this, we can find that 2b plus b, how much will be 3b.
3b plus a upon 2b minus b, how much that? b minus a. Yes, so we found here x plus 4a upon x minus 4a is equal to 3b plus 4, 3b plus a upon b minus a. This is number 1, that right. Now second 4b x plus 4b written that हमको 4b नहीं चलाना. देखिए 4 और b को नहीं चलाना है, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू 4b इंटू 2a अपॉन a प्लस b. यस, x इज इक्वल टू 4b इंटू 2a. 8 को हमने क्या लिखा? 4 इंटू 2, b को 4 के साथ अरेंज किया, कोई ऐसा नहीं इशू. दैट इज डायरेक्ट इफ यू वांट यू कैन राइट दैट 4b नीचे ले जाइए, सीधे क्या बचेगा? 2a बचेगा ऊपर. ठीक है, डोंट माइंड अबाउट दैट सर वाई राइटिंग दिस वे. दैट आपको अगर लग रहा है कि नहीं हम ऐसे लिख देंगे x अपॉन 4b, तो ऐसे लिख दीजिए. यू कैन राइट नो प्रॉब्लम दैट x अपॉन 4b, कोई दिक्कत नहीं. टू एक्सप्लेन दिस, so 4b ब्रिंग डाउन x अपॉन 4b equal to 2a upon a plus b. Yes, then apply C and D. One thing more, that if you apply C and D, so here you have to write by C and D. जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर लिखना है by C and D. Here I am going to apply C and D. What will be? x plus 4b upon x minus 4b. What I did? Numerator plus denominator. Numerator plus denominator upon numerator minus denominator, x minus 4b. राइट साइड आल्सो यहाँ भी अप्लाई करिए. 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस b. कैसे लिखा? 2a न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जब माइनस करेंगे दिस साइन विल बी चेंज. सो वी कैन राइट हियर x प्लस 4b अपॉन x माइनस 4b equal to 2a plus a, how much? 3a plus b upon 2a minus a minus b, right? So this is number second. Check not working. Now this is number second. Now this is second equation. So add first and second. X plus 4a upon x minus 4a, x plus 4b upon x minus 4b. We have to add first and second. Now I am going to rub this thing, that no need, already I solved it. So add what? First and second. If you add, so here x plus 4a upon x minus 4a, this plus x plus 4b upon x minus 4b equal to, is equal to, a का इधर है, b का इधर है, sorry, first part here and second is there. So we can write 3b plus a upon b minus a. Yes, plus this, ये वाला part इधर है. So we can write 3a plus b upon a minus b. Yes, now simplify this. Also I am going to rub that. Simplify that. Simplify here b minus a minus b. अब क्या होगा? LCM b minus a minus b. This also make the b minus a. How can you make that? You can write this 3b प्लस a अपॉन b माइनस a माइनस, हमने बार किया माइनस, क्या हो गया? 3a प्लस b अपॉन a माइनस, सॉरी b माइनस a, b माइनस a. अब देखिए यहाँ a माइनस b था ना, here was the a माइनस b, टेकन द माइनस आउट, सो here became the प्लस, b के पहले प्लस हो गया, a के पहले माइनस हो गया. अगर हम यहाँ ऐसे लिख दें, ठीक है, तो भी सही है, और उसके बाद ऐसे लिख दें, then also it is the corrected. Now b minus a, what will be? LCM. So LCM will be b minus a. So here what will be? 3b plus a minus 3
a plus b. अब ये गलत हो गया. This is the wrong that I written that. Sometimes student doing the fault, this kind of the fault is major fault that. Yeah. If not clear that, write the bracket. और अगर आप समझ में आता तो just direct you can remove the sign from plus to minus. So I'm writing here. This इसी का वैल्यू है. So we can write that 3b plus a minus 3a minus b whole upon b minus a. Now check that 3b minus b, how much will be 2b, a minus 3b minus 2b whole upon b minus 3b minus b, a minus 3a, 2a. Yes, so here 2 common, what is b minus a upon b minus a. This is cancel. How much result came? We found that this plus this, and this plus this value coming that 2. ठीक है? If not clear, so watch the video again, so you can find the value that. Now student, this was about the. Now next questions. Now student, this type question very important for the board. If given that this type question, how do you do that? Here you can make easy by using the componendo and dividendo. Let us start that by using the componendo and dividendo. Numerator plus denominator upon numerator minus denominator is equal to right side also. You have to same process follow that. So here under root x plus 4 plus under root x minus 10 numerator plus denominator x plus 4 minus under root x minus 10 upon, this was the numerator plus denominator. अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. जब माइनस करेंगे जरा साइन ध्यान देना. सो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. फर्स्ट यू राइट न्यूमरेटर अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 10 माइनस अब लिख रहे हैं यहाँ पर माइनस. या इफ इट बी माइनस हियर, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 10 इक्वल टू राइट साइड सेम प्रोसेस यू हैव टू अप्लाई दैट. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. 5 प्लस 2 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 2. 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2. इट इज कंपल्सरी टू राइट बाई componendo and dividendo. Don't write this. Write in full form that componendo and dividendo. Okay. Now see. X minus 10, this is the cancel and here this is the cancel. ठीक है. इस तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे साफ करेंगे, ऑटोमेटिक आता जाएगा आपका जो है. x minus 10 cancel, x plus 4 under root cancel that. Now how much we can write? This is the equal to 2 under root x plus 4 upon 2 under root x minus 10. x plus 4 2 टाइम है ना, तो 2 रिटर्न. Here x minus 10 under root x minus 10 2 time है, so 2 under root x minus 10 return that. Cancel equal to 5 plus 2 7 upon 5 minus 2 what is 3. Correct that. Now we have to remove this square root को हटाना. क्या करेंगे जो है स्क्वायर कर देते हैं. तो if we square, so we can write that okay here write x plus 4 upon x minus 10 is equal to 7 7 जा 49. अच्छा कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है उनका मैथ कमज़ोर हो. सो यू कैन राइट हियर अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 upon 3 whole square. What I did that? Squaring both sides. Here you have to mention that squaring both sides that. ठीक. Square root will be finished that. अब ये भी नहीं जानते हो how it will be finished the square root by squaring, that is their problem that. So if you squaring both sides, square of under root will be same number that. अगर आपसे कहा जाए what will be value of under root x square, under root x का square, तो आप same value will be that x, that will be same value. So what will be here x plus 4 upon x minus 10 equal to 49 upon 3 3 जा 9. Yes. Now
चाहे अभी भी तो यहाँ भी यू कैन अप्लाई हियर ऑल्सो सी एंड डी और बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन फाइंड दैट. ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन. दैट नाउ इफ यू अप्लाई सी एंड डी अगेन हियर, again many times you can apply that. How much needed you can apply that. If you apply here, so numerator plus denominator, what will be here? Here this also remove that. Yeah, numerator plus denominator. So x plus 4 plus x minus 10 upon numerator minus denominator. x plus 4 numerator minus, ध्यान रखना है माइनस लगाने जा रहे हैं, माइनस a plus what will be plus equal to 49. What is the 49 minus 9 upon plus 49 minus 9, that numerator plus denominator upon numerator minus denominator, right? Okay, right here what by C and D. ठीक. Now what is being the cancel that here x being the cancel. So x plus x how much? 2x. And 4 minus 10 how much that? Minus 6 upon how much here? 14 is equal to 49 plus 9 58 upon how much? 40. ठीक है ना, गलत तो नहीं हो रहा, देखा जाएगा. Okay, now transpose this 14 there. So 2x minus 6 equal to 58 into 14 upon how much? 40, right? Reduce हो रहा, reduce करिए जो है. So that will be 2 7 जा and 2 20 जा. Yeah, it is reducing that. Now by 2 10 जा and 2 2 जा 4 2 9 जा. Yes, so we can say 2x minus 6 equal to 2x minus 6 equal to multiply with 203 upon 10. 203 upon 10. Now transpose this. So transpose 2x minus 6 is equal to this. So 2x is equal to what will be 203 upon 10 plus 6. This 6 will go that side, will be plus. Okay. So now 2x is equal to 203 plus 60 upon 10. 10 is the LCM, right? So 2x is equal to what will be 263 upon 10. 2 को भी ट्रांसपोज कर दिया जाए. सो वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू 263 अपॉन 2 नीचे जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 263 अपॉन 20. दिस इज द वैल्यू ऑफ द x. यस स्टूडेंट. सो वन मोर क्वेश्चन. Now student, now this type of question, very interesting question, that pay more attention to understand this. Here also we have to apply the component and dividend. See, this is not given the denominator. That student, most of student I found that during the exam they do the fault, इसको छोड़ देते हैं, इधर को अप्लाई कर देते हैं जो है. ओके, हियर आई हैव टू राइट x अपॉन 1. ठीक. अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया. दोनों साइड, बोथ साइड हैविंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देन यू कैन अप्लाई सी एंड डी. अदरवाइज यू हैव नो अथॉरिटी टू अप्लाई द सी एंड डी. मीन द रेशियो, टू रेशियो शुड बी इक्वल. So use the property of proportion, prove that b square is equal to 2a square x upon x square plus 1. चलिए इसे फाइट किया जाए, क्या होगा, कैसे होगा. See, method is same, that apply c and d. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, हमने क्या किया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ठीक, यही चीज़ इधर भी करिए जो है. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या लिखा, न्यूमरेटर लिखा, अपॉन प्लस
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन होल अपॉन न्यूमरेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर minus, be careful here that minus if you put here this sign will change, minus under root a square plus b square plus under root a square minus b square. That now look here, here don't forget to write by C and D, componendo and dividendo. Now this being cancelled and this also being the cancelled, right? So we can write here x plus 1 upon x minus 1 is equal to this plus this 2 times coming that, so can write under root a square plus b square whole upon this also 2 times coming that, we can write under root a square minus b square. I think that there will be no doubt for such kind of the question that chalk is not available. Now student to cancel that, so again by the same process previous method that you have to remove this square root. How can you remove? By squaring both side that, so दोनों square करेंगे. So here we can write that x plus 1 whole square upon x minus 1 whole square equal to a square plus b square upon a square minus b square. ठीक है? Now you people are sincere that you can understand how came that. No question mark for here. So square root now gone. Apply the formula a plus b whole square that. So this I want to rub. Delete कर इसको. Now apply your formula. X square plus 1 plus 2x upon x square plus 1 minus 2x equal to a square plus b square upon a square minus b square. That yes, x plus 1 whole square upon x minus 1 whole square. That okay. Now rub it, सही है ना, रब इट. नाउ अगेन देख लेते हैं सी एंड डी अप्लाई करके. अगेन अप्लाई द सी एंड डी, चॉक वेरी स्मॉल. अप्लाई द सी एंड डी. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इक्वल टू a square plus b square plus a square minus b square whole upon a square plus b square minus a square plus b square by C and D, componendo and dividendo. Right? Now student, something being the cancel that 2x being the cancel here that, so x square how much, 2x square 1 plus 1 how much, 2 whole upon here what being the cancel that x square and 1 कितना हो गया 2x how much 4x equal to, ठीक है, is equal to here say that b square cancel and a square cancel, how much became that 2a square upon b square how much 2b square, 2 cancel, right? Okay, 2 take the common here, 2x square plus 1 upon 4x equal to a square upon b square, 2 2 ja 4, clear? So you can write here x square plus 1 upon 2x equal to a square upon b square. What is our aim that? Our aim b square is equal to that, b square is equal to that, we have to prove that. So b square ये आपका जो है, now you are near to your result that. So b square चाहे आप रेसिप्रोकल लीजिए, either you can write that 2x upon x square plus 1 equal to b square upon
a square. Now see that what taken, a reciprocal taken that. Here if taken the reciprocal 2x upon x square, 2x upon x square plus 1 b square upon a square. ठीक, हमको क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए. a स्क्वायर को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करिए a को. oh this is like the stone. now oh my god, now transpose the a square. So we are very near to the result that 2 a square x upon x square plus 1 equal to b square. Am I right or wrong? Yes, check that. b square is equal to 2a square x upon x square plus 1. This was my result to prove that. Very important and good question that was that. So student, this type of question please take them from the some different type of question from the exercise, from the example, and do practice that. Yeah. Okay. Thanks for today.